नमस्कार, शुरू करें? Shall we? Good afternoon, friends. We'll do both languages, so just be patient for a while. Friends, I am talking today about the approach, the antics of this government vis-a-vis a vital sector of governance in this country, an organ of governance known as the judiciary. And with great regret, I have to start by saying that the Modi government approach to the judiciary smacks of the three I's, and I, where the three I's stand for intimidation, interference, and influence. These unfortunately have become the insignia, the notorious spikes of this government. The ruling party in this government can equally be accused of the three S's: an attempt to sabotage, subjugate, and subvert the judiciary. So, this deadly combination of the three I's, intimidate, interfere, and influence, along with the three S's, to subvert from within unnecessarily by all kinds of antics the judiciary, is deplorable. Friends, it is now possibly the worst kept secret for many years, both in legal circles and outside, that this control freak, this micromanagement and dossier loving Sarkar, control freak, micromanagement and dossier loving Sarkar, and its ruling party have indulged in several manipulative tactics qua the judiciary. Let me list to you four or five of them, or five or six of them very quickly, and then come to the context today. A, excessively but selectively delaying appointments, judicial appointment proposals from the collegium regarding High Court appointments and Supreme Court appointments. Justice Qureshi may be one example. There are many, many more. I don't want to take names. Second, this government and its ruling component in particular has arbitrarily bifurcated approved judicial appointee lists. So what is done is selectively from a common list, you appoint 3, 4, 5 first. And then after a few months, you appoint the others in that same common list, thereby irreversibly prejudicing their inter se seniority. Let me tell you, I am not in a position to take names, but this also has happened, indeed happened very recently in respect of a very leading high court of the country. Third, this government and ruling party has inaugurated an ambience, an atmosphere of fear, trepidation, anxiety, and hesitation. Tried to do this among the judicial sector by the misuse of this dossier raj and oblique insinuations based thereupon. Number 4, it has tried to prevail upon judicial collegia. As you know, collegiums are always anxious to fill up ever increasing vacancies. So, to take advantage of this urgency to fill vacancies, they have constantly tried to prevail upon judicial collegia to do punitive transfers of those perceived as inconvenient. Fifthly, it has attempted illegally and unfairly to interfere whenever it so deems fit according to its own narrow thinking,
with judges, judiciary, and the legal process generally. Last but not the least, it has attempted to install a section of judicial personnel vetted by it and its supporters on impermissible tests of loyalty, ideology, and commitment to its own norms. Friends, interference, if we look at, for example, out of the three I's, interference, intimidation, and influence, there is a long, non exhaustive list which I could give. But the most startling, the most shocking example comes from Karnataka only yesterday. It is not Karnataka which matters, it is not the High Court or the judge who matters. It is symptomatic of this deep seated malaise. The learned sitting judge of that court just yesterday said, and I quote, I'm quoting, mind you, a sitting judge told me that he had received a call from Delhi, bracket name not disclosed. The person from Delhi asked about me. I told him that I am not affiliated to any party. He said that the additional DGP is from North India and he is very powerful. The High Court judge said, adding that a reference was also made by that judge who talked to this High Court judge regarding transfer of another judge. This has been quotes. Honorable Justice Sandesh, who said this in quotes, added that he had reported this perceived threat to the authorities. And he said that it amounts to a direct interference in the independence and of the judiciary and dispensation of justice. This is only symptomatic. I have given you 6 categories of the antics, the tricks, the shenanigans adopted to do this for the last 7-8 years. Intimidation, for example, when a bench of the Supreme Court made strong and directly pertinent observations for the simple reason that the person concerned in the Nipur Sharma case was seeking relief of the court. When they made directly pertinent observations regarding the conduct of that person seeking relief, namely Nipur Sharma, we saw three-pronged attack. And this three-pronged attack is the signature campaign of the BJP. All too familiar. 1. Savage and faceless trolls spewing fake news and propaganda immediately started. Second, an orchestrated letter by so-called intellectuals. And 3, a one-sided and contemptuous reporting planted in large sections of the Godi media. The large silent majority stood by this vital, possibly most fated and supported organ of governance, the judiciary. But a sitting judge of the Supreme Court, Justice Pardiwala, was forced to observe, and I quote, attacks attempted at our judges for judgments will lead to a dangerous scenario where judges will have to pay greater attention as to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of the respect for the courts, unquote. Please juxtapose this statement of a sitting Supreme Court judge with the kind of trolling attacks which happened immediately after the bench dealt with that case. City, with authority even above the judiciary, and with reckless over-adventurism intended to intimidate judges. I just want to remind you of a little remembered comment by then Minister Mr. Meghwal of the ruling BJP in 2016, 6 years ago, who said that you must have a stop put to the running commentary by the judiciary against other organs of the state, quote unquote, running commentary. Influence, for example. It is sad to find that a fact checker
The person under arrest is a fact checker. He simply checks facts and says, this is a false claim. The entire army of law officers was put out by the government to oppose bail matters, quote this fact checker. The entire army of senior law officers was saying what? They were saying, in a worse case than shooting the messenger while ignoring the message, they were speaking in defense of those whose illegal conduct had been exposed by that fact checker. It was a sad sight. They desperately and sheepishly opposed the bail on grounds that were far removed. For example, it is reported and well known, some of us were in court. One of the arguments of the state was that the sentiments of followers had been hurt by having a seer's hate speeches exposed. So you give a hate speech, so-called seer, I expose it by a fact check or by showing it, and my exposition or my exposure will hurt your feelings, is the argument officially orchestrated by this ruling party and the government, is that all of this is part of a grand shady conspiracy. Such small-minded and outrightly unconstitutional claims expose this government and its defenses in court. Friends, I will end by telling you two more things. One is, of course, official written representations. And one is as recent as 10th July. Today is, I think, 12th, 2 days ago, by one of the largest high courts in this country, Bombay, to the law minister, taking objection to the clearance, or rather the non-clearance, of umpteen names for appointment to the Bombay High Court. That officially is functioning just about half, roughly, of its strength. People in the lists approved at the collegium level not once but twice over 2 to 3 years are still pending, with the court functioning at 50% odd strength. Lastly, friends, and this is a second slightly unrelated but still relevant point in connection with the judicial subject we are talking about today. A very important judgment yesterday deserves to be underlined by the Supreme Court regarding bail jurisprudence. We have, friends, over the last 7 years seen egregious executive action on flimsy grounds, usually invoking inapplicable provisions like sedition, like UAPA, the most draconian they can find on the book. The biggest defaulters in this misuse of provisions, inapplicable provisions, has been the central government. Equally, they know that the process is the punishment. The end result be damned. The process is the punishment. Tardiness or hesitation of courts through bail intervention in such contexts exacerbates this bad situation. Hence, friends, the relevance of yesterday's judgment. The Supreme Court yesterday has said that the lack of speed in dealing with bails, as also a hesitation to grant them, would, quote unquote, make India look like a police state. The Congress believes that this is much needed guidance from the Apex Court about the approach to bails and about how bail, not jail, being the norm is operationalized in practice. And I say that this is particularly contextual and important where the ruling dispensation seeks to rule through fear and control through coercion. We, therefore, the Congress Party, intend, using due process of law, in accordance with the Constitution and subject to judgment, and we shall initiate it through appropriate state amendments in these states, Congress ruled states, regarding bail jurisprudence. दोस्तों, मैं संक्षेप में दोहरा दूं हिंदी में. मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सरकार 3 आईज वाली सरकार है, जो मैंने आपको कहा अभी, डराना, भड़काना, इंटिमिडेशन, गैर कानूनी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस,
और दुष्प्रभाव इन्फ्लुएंस, इंटिमिडेशन, इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस। और ये सब विशेष रूप से दयनीय हो जाता है जब इसका दुरुपयोग किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण संस्था के लिए, यानी न्यायपालिका। दोस्तों, कई वर्षों से ये एक खुला सच है, कंट्रोल फ्रीक सरकार ने बार बार अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं इस तीसरे अंग अपॉइंटमेंट्स के विषय में। अपॉइंटमेंट्स के विषय में, जबकि आप जानते हैं कि अधिकतम बड़े बड़े हाई कोर्ट्स में 50% स्थान रिक्त हैं, और ये विलंब करवाना जानबूझकर सिलेक्टिवली उन नामों के विषय में जिनसे ये सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार जिनको नहीं चाहती है, जिनसे खुश नहीं है। दूसरा, ये आजकल आम हो गया है कि जो नाम सर्वसम्मति से कोलिजियम्स भी अनुमति दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, चाहे उच्च न्यायालय और उसी सूची के बाकी नामों को कुछ महीनों बाद किया जाता है, जिससे कि आंतरिक रूप से वरिष्ठता, सीनियरिटी में दुष्प्रभाव पड़े। और जिन लोगों को ये सरकार रोक नहीं सकती है कोलिजियम के सुझाव के कारण, उनको कम से कम इतना विलंब करे कि उनके आगे की सीनियरिटी हमेशा के लिए खराब हो जाए। और हाल में ऐसे बहुत कई उदाहरण आए हैं। तीसरा, एक पूरा वातावरण बनाना भय का, झिझक का और हर प्रकार के प्रसंगों का दुरुपयोग करके हिंट करना, इंसिनुएशन करना डॉसियर राज के आधार पर न्यायपालिका के विषय में, न्यायाधीशों के विषय में। चौथा, येन केन प्रकारेण कोलिजियम्स में कहीं न कहीं से दंड के आधार पर ट्रांसफर, स्थानांतरण करवाना उच्च न्यायालय के जजेस का, उनको डराने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए। पांचवा, हर प्रकार से जहां जहां अपनी फलसफे, अपनी नीति और अपने उद्देश्य से मेल नहीं खाते हैं जजेस, उन पे ऊपर दुष्प्रभाव डालना, हस्तक्षेप करना। और अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपनी कोई एक वफादारी की कसौटी नहीं बनाकर उसके आधार पे न्यायाधीशों का चयन करना या उनका प्रस्तावित नाम आगे भेजना। ये 6 चीजें इस सरकार ने प्रचुर मात्रा में पिछले 7-8 वर्षों में की है। हमारे पास ठोस उदाहरण है, पूरा देश जानता है। नाम नहीं ले सकते इसका मतलब नहीं है कि कानूनी सर्कल्स या उनके बाहर ये सर्वविदित नहीं है। इस संदर्भ में जो कल कर्नाटक से एक स्थापित न्यायाधीश के वक्तव्य आया, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटरफेरेंस का एक सबसे ज्यादा भयानक उदाहरण। और ये कर्नाटक की बात नहीं है, ये उस लर्नेड सिंगल जज की बात नहीं है, ये इस पूरी चीज की गंभीरता को दर्शाता है, जिसके मैंने आपको 6 संस्थापिक उदाहरण दिए इस सरकार द्वारा। उस जज का मैंने कोटेशन आपको अंग्रेजी में पढ़ दिया है, मैं वापस अंग्रेजी में नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने सीधा कहा है कि ही हैड रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दिल्ली, द पर्सन आस्क्ड हिम अबाउट हिम, आई सेड आई एम नॉट अफिलिएटेड टू एनी पार्टी, ही सेड द एडीजीपी इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ही इज वेरी पावरफुल, इत्यादि इत्यादि। मैं वापस नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया है। ये एक भयानक, दयनीय, एक प्रकार से विश्वास नहीं आता वैसा एक वक्तव्य है एक सिटिंग जज द्वारा। इससे ज्यादा गैर कानूनी हस्तक्षेप का बुरा उदाहरण कौन सा हो सकता है।
अभी जो इंटिमिडेशन की हमने बात की, डराने, भड़काने, दुष्प्रभाव डालने की, उसका एक बहुत ही अजीबोगरीब उदाहरण आया जब एक महिला ने खुद रिलीफ मांगी, नूपुर शर्मा ने, और जो याचक होता है, जो रिलीफ मांगता है, उसको पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र रखता है उच्चतम न्यायालय, वो रिलीफ को मना करे और मना करने के कारण दे, मौखिक दे या लिखित दे, वो कह सकते हैं, अधिकार क्षेत्र पूर्ण है। उस दौरान जब एक खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय के ये टिप्पणियां की कि हम आपको क्यों नहीं दे रहे हैं रिलीफ, तो 3 चीजें हुई तुरंत, जो इस सरकार और इस सत्तारूढ़ पार्टी की सिग्नेचर है, उनकी पहचान है। एक, हर मिनट, हर घंटे, हर प्रकार के ट्रोलिंग, झूठी न्यूज, प्रोपागेंडा पूरे सोशल मीडिया में फैल गया, जजेस के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, इस केस के बारे में, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज, सोचा समझा, बनाया हुआ, बनावटी, कृत्रिम, बुद्धिजीवियों की चिट्ठी। यद्यपि ज्यादातर लोग, जिनको आप साइलेंट मेजॉरिटी कह सकते हैं, उन्होंने समर्थन किया उस निर्णय का भी और जो टिप्पणियां हुई उसका भी, लेकिन एक उसी खंडपीठ के एक न्यायाधीश, माननीय जस्टिस पार्डीवाला साहब को ये कहना पड़ा विवश होके, और वो कोटेशन मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया है, इसलिए वापस नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा, चेतावनी दी कि इस प्रकार से अपने वक्तव्यों के लिए जब न्यायाधीशों पे, सोशल मीडिया पे इस प्रकार के आक्रमण होंगे तो पूरा एक विकृत हो जाएगा हमारी न्यायपालिका का पूरा ढांचा। मिनिस्टर श्री मेघवाल जी ने भी कहा था बीजेपी की तरफ से कि जल्द से जल्द हमको न्यायपालिका की रनिंग कमेंट्री को रोक देना चाहिए, रोकथाम कर देना चाहिए। लोकसभा में कहा था 2016। ये उनकी सोच, उनका मंतव्य, उनकी उद्देश्य को दर्शाता है। और अब इन्फ्लुएंस पे अगर आए हम, दुष्प्रभाव पे, तो जिस प्रकार के अजीबोगरीब, हंसाने वाले दलीलें और समर्थन सरकार की तरफ से आया, एक बेल के मामलों में फैक्ट चेकर ने जो बेल की, ऐसे अजीबोगरीब चीजें जिससे कि पूरी तरह से इस सरकार की सोच एक्सपोज होती है। एक, और बड़े बड़े वरिष्ठ लॉ अफसरों की ये दलील थी, एक दलील थी कि जिसके बारे में ये फैक्ट चेक हुआ था और जो एक्सपोज हुआ था, उनके सोच को, उनके मन को ठेस पहुंची होगी, इसलिए आवश्यक है कि इस व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा किया जाए। यद्यपि जो फैक्ट चेक किया गया था वो हेट स्पीच के बारे में किया गया, बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। हर केस में जो दलील आई वो किसी भी मुद्दे पे नहीं आई, वो सिर्फ बरगलाने और ध्यान कहीं और आकर्षित करने के आधार पर बनाई गई। दोस्तों, मैं अंत में एक और मुद्दे को छूते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, और वो कि हर बेनामी, हर बिना वजह के न लागू होने प्रावधान के आधार पर भय और कंट्रोल इस सरकार ने करने की नीति उठा ली है और तरकीबें निकाल ली हैं। कभी वो सेडिशन के प्रावधान का दुरुपयोग करते हैं, कभी यूएपीए का और अन्य कई प्रावधानों का। सबसे ज्यादा उल्लंघन इस मामले में केंद्र सरकार और उस केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें प्रदेश में वही करती हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये प्रावधान लागू नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी जानते हैं कि जो समय लगेगा इसका हल निकालने के लिए, वही अपने आप में
दंड है, सफिशिएंट दंड है, पूर्णतया दंड है। देने में बेल द्वारा, तो ये इस बात से ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं, ज्यादा इस हरकत को दोहराने की क्षमता रखते हैं। इस संदर्भ में जो कल निर्णय आया है, जिसमें बड़ा स्पष्ट कहा है उच्चतम न्यायालय ने कि अगर बेल नॉट जेल एक नियम है, एक सिद्धांत है, तो एक तो विलंब होना बेल के निर्णित करने में, बेल के अंतिम निर्णय में विलंब, उस बात के बारे में बात की उच्चतम न्यायालय में। और दूसरा कि अगर आप इसको नहीं देंगे बेल को, या उसमें झिझकेंगे या व्यवधान प्रकट करेंगे उसके अंदर, तो भारत को लोग पुलिस स्टेट कहेंगे। ये मेरे शब्द नहीं, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। कांग्रेस पार्टी ये निश्चित रूप से मानती है कि जो गाइडेंस, जो चीजें लिखी हैं कल वाले निर्णय में, उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और कांग्रेस इस बात को आपके सामने रखती है कि कांग्रेस कानून की परिधि के अंतर्गत स्टेट अमेंडमेंट्स द्वारा, लेकिन हम समझते हैं कि ये अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से ऐसे समय पर जब पूरा देश एक भय के वातावरण द्वारा, एक कंट्रोल के वातावरण द्वारा निर्णित किया जाता है इस सरकार द्वारा। धन्यवाद। वो तो इसी पे वैसे भी अब तो हम काफी इस मामले में पर्टिकुलर हैं। पहले इसको खत्म कर लें, पहले इसकी बात कर लें, उसके बाद देखें। See, in a democracy, the way out is to educate, enlighten, and bring to the attention of the people of this country, through people like you, the true ills. In a democracy, there is no other forceful method and should not be. Secondly, the way out is to rule by example and emulate by not merely preaching but practicing. That is why at the end I have said that the Congress ruled states are likely, of course subject to their own legislatures and the constitutional provisions, enact amendments which will liberalize the bail law. Thirdly, I think it is important that each organ sees and knows the way, the shabby manner in which the judiciary is being treated by this government. Okay. नहीं, देखिए, मैं बाकी किसी बातों में टिप्पणी नहीं करने वाला, बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं मैं आपसे। मैं दो मुद्दों में निंदा से सहमत हूं, मैं यानी कांग्रेस पार्टी। मुद्दा नंबर एक, कि ऐसे फंक्शन, ऐसे पर्व, ऐसे दिन सिवाय सरकार के कुछ सीमित अंगों के लोगों के होने से और किसी विपक्ष के अंग को किसी व्यापक रूप में नहीं बुलाना भर्त्सना योग्य है। हम आज लोकतंत्र, गणतंत्र, और वो भी लोकतंत्र गणतंत्र के मंदिर की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट, संसद। उसमें अगर आप बाहर रखते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, निष्कासित करते हैं, बहिष्कार करते हैं ऐसे लोगों का जो इस लोकतंत्र गणतंत्र में, चाहे आपसे मेल रखें ना न रखें, इस लोकतंत्र गणतंत्र के एक अभिन्न अंग हैं, ये मैं समझता हूं संकीर्णता दिखाता है, पेटी माइंडेडनेस दिखाता है, और इसका कोई भी तर्क या कुतर्क हो ही नहीं सकता। आपको नियंत्रण करना है, आपको जितनी वाहवाही लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन और गणतंत्र लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स का बहिष्कार करके नहीं। ये एक। दूसरा, मैं विनम्रता से कहूंगा, यद्यपि ये सोच रही हो, नहीं रही हो, उद्देश्य रहा नहीं हो, लेकिन सत्यमेव जयते यद्यपि इमारत पे है,
लेकिन चिन्ह पे कहीं भी हमको नहीं दिख रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको तो मैं समझता हूं अभी भी संशोधित किया जा सकता है, कर देना चाहिए। सत्यमेव जयते इस देश, इस महान देश का एक बहुत महान स्लोगन है। इससे बड़ा कोई हमारे लिए चिन्ह नहीं है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई एक सोच नहीं है। आप देखते हैं इसको न्यायपालिका के पीछे, आप देखते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के पीछे जहाँ जो पद है, ये भी हम बहुत आदर के पूर्वक कह रहे हैं कि ये तुरंत इसका संशोधन करना चाहिए। इस देश की आहुति में ये बहुत आवश्यक है। Other parties have commented upon it. I don't want to comment beyond the 2 points I have said, and I'm repeating them in English now. The 2 points on which the Congress stand, I can elaborate fully. One is serious. In any democracy, much more so at the inauguration of a part of the temple of democracy. It is unbelievable and incomprehensible how entire opposition, how large sections of the non-ruling BJP can be excluded in this manner. Nobody can deny that we are all inalienable components of this democracy and this temple of democracy, and therefore our presence, at least by invitation, should have been mandatory. It only displays and reflects narrow-mindedness, pettiness, and ought to have been completely avoided. It reflects a wrong approach, a malafide approach, and I would clearly condemn this. The second thing which requires comment is that Satyameva Jayate is not merely a word or a slogan, is very, very serious, odd, and even today it should be rectified. This is something which is a badge of identity for India and Indians, and its omission and absence on this symbol is, as I said, incomprehensible and unexplained. Thank you. हमने अलग से बात कर लेंगे, अलग से बात कर लेंगे।